I'm standing exactly where half a hotel was swept away. This is the road. I'll ask Pawan to show you. Can you see? That's the road, and that's part of the hotel which got swept away. That's the Shirar Hotel. I'll ask Pawan to show you. That's the Shirar Hotel on the Kullu-Manali highway. Half of it has gotten swept away, and that's where the road has cut. You can see helicopters there, first helicopter there, which has finally been able to get through to Manali, because the valley, even though the Kullu Valley had cleared up, the Manali Valley is a little narrow, so a little difficult. कहाँ से आ रहे हैं जी? बिहार. आगे से? तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत नहीं ठीक है? क्या हुआ? पेट में दर्द है? या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है आगे? पता नहीं, देखा नहीं मैंने. आगे जाओ क्या हुआ इधर? इनको क्या हुआ है? पेट में दर्द है. पेट में दर्द है. कहाँ? कुल्लू जा रहे हैं? कुल्लू हॉस्पिटल. कोई मिला नहीं उधर से? उधर यहाँ से गाड़ी आई ना, गाड़ी में आए, फिर यहाँ से गाड़ी आएगी, उसमें जाएंगे. अब रोड बंद पड़े हुए ना सारे. इस चक्कर में फिर यहाँ से जाना पड़ेगा. You know, it's tragic. She's now being carried because this poor girl has a really terrible stomach ache. It's tragic because there's just no help, it seems. You know, the rain might have stemmed, but this is the apathy that continues. आप कहाँ से हैं सर? डोबी. वहाँ पर कैसा है अभी? बहुत बुरे हालात है. अभी तो मुश्किल हफ्ता 10 दिन लग जाएगा. So this is the road that has completely been washed away to Manali. We are coming in from Kullu right now. We're going to try and attempt by foot to reach Manali, which is still about from here easy 50 kilometers. So we're going to try and get as close as possible, because that is where, at least right now in this region, is the true extent of the devastation. Kasol and Manali. We're going to try and attempt to get to Manali there. So we finally managed to reach Manali town. You can see still a lot of tourists that are stranded right here, waiting to get home safely, looking for a mode of transport. And I'll actually show you, because you know, it's been from where we have come in, the road has been washed away from various sides, and a big example right in front of me, right before Manali town. The entire road, the whole chunk of it, completely washed away. You know, if you've seen those visuals coming in of many tourists taking of how the entire road in Manali had caved in, well, this is the beginning of it. There's nothing left. It's a huge crater. All of it practically washed away by the river Beas. What we're going to attempt now is, we've come to Manali, we're going to try and make our way to Alu ground. That is where the maximum devastation happened, when there was a surge in the water levels of the Beas. So these are what villagers are actually doing. They're cutting across to Kullu, getting basic essentials and coming back. This resort that you see, part of it has been washed away itself, but you know, that person can allow all of these people who are, you know, I'll show you that. You know, these are people from villages who are picking up basic essential commodities and going to their village. You can give access, and there's no access. I met somebody with a medical emergency, a father taking his daughter who's got a debilitating stomach ache. Let me ask them, ma'am, आप मुझसे बात करेंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भुंतर से आ रहे हैं मैम. भुंतर से आप चल के आ रही हैं? नहीं, यहाँ तक गाड़ी में. यहाँ तक गाड़ी, फिर यहाँ से निकले. आपका गांव आगे है? हाँ, पतली कुल जा रहे हैं हम. यहाँ से पतली कुल जा रहे हैं. कितना बुरा हाल है आपके यहाँ? अभी पता नहीं, अब जाके देखेंगे. आप कुल्लू में थे? हाँ, मेरे मायके ना उधर पतली कुल में, वो सारा बह गया है. तो मैं भुंतर से आई अभी मिलने उनसे. मिलने आए? हाँ, उन्होंने ना कुछ सामान निकाला, बस जो पहने कपड़े उसी के साथ निकल गए वो बाहर. बस जो पहने उनके साथ लगभग 15 करोड़ का नुकसान होगा मेरे मायके का. आपके पूरा पतली कुल जो गांव है? हाँ, पतली कुल से उस साइड है माहिली गांव. माहिली? हाँ, वो सारा पानी वानी कुछ नहीं है वहाँ पर? कुछ नहीं है अभी, कोई सुविधा नहीं है, ना लाइट है ना पानी है. फोन भी आज हुआ, आज पता लगा हमें कि ऐसा हुआ. मैं वैसे ही चल पड़ी. तो आप सामान लेके जा रहे हो उनके लिए? मैं कुछ खाने पीने का सामान डाला जितना मेरे से उठाया जा रहा था. अकेले आए हो आप? हाँ, नहीं, बेटा आया था मुझे यहाँ छोड़ने, वो वापिस चला गया. हाँ. In terms of, you know, while the rescue
relief operations are on. The villagers here have been left to themselves. Medical emergencies they can't even get. This is the Manali Valley from here on. And there's nothing here is what we've been told. Everything has come to a standstill. Anyone for medical emergencies, for basic water, drinking water, has to be taken to the other side. Now there's somebody coming in with a medical emergency. You can see there's an elderly lady that is being taken by her family. She's on a drip. And she's been taken through, I don't know how she's going to make her way. She was brought in on a stretcher till now. And I really don't understand how this poor lady is going to actually make her way all the way to the other side, because there's no way she'd be able to wade through, the waters of the other side. This has happened right now, just about on our watch. You can even see the mud trickling in from the top. But these are the visuals which we will see in days to come. They couldn't even get out, and now people are coming in. आप कौन है ये? आप जानते हैं? मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं टैक्सी वाला हूँ ना। एकदम से मुझे बोला है कि इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, तो मैं साथ में चला हूँ हेल्प करने के लिए। आप हेल्प करने के लिए साथ में चला हूँ। पर यहाँ से कैसे जाएंगे आप? करना पड़ेगा कुछ। मैम क्या करना, मजबूरी है। क्या बात हुई है मैडम? तो स्नेक ने वो थोड़ा सा कट लिया ना। सांप ने काट लिया है? स्नेक बाइट का केस है? हाँ जी। यहाँ पर तो बिल्कुल नीचे कहाँ से आप? ये बोलते रिजॉर्ट वाले से पूछेंगे, रिजॉर्ट वाले की वहाँ वाला तो हाँ इनसे पूछे जाएंगे ना। अब क्या करना, पतलीकुल में फैसिलिटीज है नहीं, कुछ नहीं है। लेफ्ट बैंक की रोड सारी ब्लॉक्ड है जी जी। लाइट भी है, मनाली भी जाना कुछ भी नहीं है, मालूम है जी। तब क्या करना, अब जाना पड़ेगा ना, जान क्या। ये तो आप कहाँ से हैं? हम लोग तो नगर से जी। आप नगर से वहाँ से यहाँ तक आए हैं? क्योंकि पूरा रोड जो ब्लॉक चल रहा है उधर। ब्लॉक ना मैम, तो फिर नीचे नगर पुल भी गया है, वहाँ से हमने टेम्पररी पौड़ियाँ चढ़ के आए हैं। ये ऐसे आ रहे हैं? क्या करना, सारे हम लोगों को मजबूरी हो गई आजकल। आप लोगों ने प्रशासन को फोन किया? किसी को फोन किया? प्रशासन को कहाँ से करें? एम्बुलेंस से आए हैं। हाँ जी, एक्चुअली CSC पतलीकुल से बंजुरेट एम्बुलेंस से आए हैं ना। एम्बुलेंस से आए हैं वहाँ? हाँ जी, यहाँ से हमारी नेक्स्ट एम्बुलेंस आएगी अगली साइड से। अगली साइड से दूसरी एम्बुलेंस? जी जी जी, क्योंकि ऊपर से छोटा रोड है ना, वहाँ तो कंजेस्टेड है जगह। पर कोई आपके यहाँ पर कोई मतलब जो लोकल प्रशासन है, वहाँ पर DC है, SP है, कोई पुलिस मदद नहीं कर रही है आपको हेल्प यहाँ से? क्या करें हम यहाँ पे, इस टाइम थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम है आज थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, किसी चीज का आज जैसा तैसा करके हो रहा, थोड़ा पूरा नेटवर्क इश्यूज है, सर्वर है नहीं। हाँ, तो 3 दिन के बाद थोड़ा सा अभी कॉल्स हो रही है। आप कौन से गांव से हैं यहाँ पर? हम लोग नगर से थोड़ा सा नीचे मछाड़ा है। नगर है, वहाँ पर कैसी हालत है? वहाँ तो ऐसा नहीं है, कुछ उलट नीचे पतलीकुल के जितना नुकसान नहीं हुआ ना। हाँ। वहाँ पे बारिश हुई, पर वो थोड़ा हाइट में है ना, इसलिए वहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ऊपर ठीक है, ठीक है, पर बिल्कुल कट ऑफ है। आप कट ऑफ है मतलब ये है कि पतलीकुल में पुल तक आ सकते हैं आप, वो ब्रिज बंद है। ब्रिज के बाद आप या तो आप चढ़ के आओ या तो फिर आप पार ही रहो। हाँ, लेफ्ट बैंक से रोड ब्लॉक है, फिर आ नहीं सकते उधर को भी। आपका नाम? संगीता। आप कहाँ से आ रही हैं? पतलीपुर। इनको गर्भवती हैं, हॉस्पिटल लेके जाना है? डिलीवरी हो गया है। डिलीवरी हो गया है। और आप कहाँ जा रहे हैं अब? कुल्लू जा रहे हैं। कुल्लू जा रहे हैं, कहाँ पर? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? बच्चे को दिखाने के, सुई वगैरह पड़ेगा ना। बच्चे को दिखाना है। तबीयत ठीक है आपका? ठीक है। You know, this is as dangerous because the desperate villagers trying their best to come to this side. I don't know why this man is attempting what he is. We are going to give it up from here because look at it. This is what is left of the road. That's it. That's the patch. And I will show you this man who's trying to come into this side. And you're practically on a ledge. And I have goosebumps looking at him doing this. Because there's a complete drop. That's the road. Well, he's been... I really want to ask him what compelled him to do so. Sir, क्यों इतना dangerous करके इधर आए हैं? नहीं, बस आगे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था तब निकल रहा था मैं। क्या काम है आपको? बस कुछ नहीं, ऐसे काम था थोड़ा पर्सनल काम है। आगे कहाँ तक कटा हुआ है? आगे तो ये युगप आपका यही एरिया थोड़ा खराब है, बस बाकी तो ठीक है सारा। कोई और रास्ता है? क्योंकि हम आप जैसी हिम्मत नहीं रखते तो कहाँ से उस तरफ जा सकते हैं? आप आगे से जा सकते हो घूम के, आगे से जो ब्रिज है ना उससे ऊपर से रास्ता है जाने के लिए। कहाँ?
ये निकलेगा, जो रास्ता टूटा है उसके आगे निकलेगा। रहते हो जी? ऊपर रहते हैं पतली पुल। चल के आए हो पतली कुल से? कितना दूर है इधर से? थोड़ा दूर है उधर का। अभी कैसा हाल है उधर? पूरे हाल है, बुरा हाल है। बह गया सब? हाँ जी। Manali, the whole infrastructure has apparently collapsed. They have to bring anyone who's sick to Kulu, and there's just no way of getting there because at this side is where the road is caved in. The administration says that side is, they've been able to open out a road, but that's witnessing traffic jams of over 11 hours straight up. Reporting with camera person Pavan Kumar, Preeti Chaudhary for India Today. The initial estimate of loss of infrastructure stands at 4,000 crores across the state of Himachal Pradesh. But it's going to go way over that is what we have been given to understand. A state which is already in 70,000 crore rupee debt. Right now, I'm at Aloo Mandi, and this was the nerve center for packaging, for grading, for dispatching fruit and vegetables that would come all across Manali, especially the orchards. They would be graded here, they'd be packaged here, and from here on you'd keep, from the plains you'd get vehicles that would come and take the produce to the plains. If you talk about plums, you talk about apples, you talk about cherries, it mostly comes from here, even in the plains of Delhi, Chandigarh and even beyond. Completely destroyed. There was a full packaging grading unit here, completely destroyed. Nothing is left of it. Where I am standing right now was to be a grading center, the third one at that has been washed away in the surging waters of the Beas. Frightening pictures. One could have well imagined what chaos would have reigned in those hours of destruction. This is the unit of the Aloo Mandi where trucks, loaders, small vans would come from the plains. Fruit would be loaded on them and it would be taken down back into the plains. What you see here is abject devastation. This is the remnants, it says right there. It is the Sabzi Mandi or the Up Mandi of this area, one of the main nerve trading centers where fruit and vegetables and fresh produce is concerned. What you see around me is a war zone type situation. I can overturned trucks, you have cars, personal cars completely smashed, loaders there which have gone inside this building, overturned, smashed, complete war zone situation. कितना डैमेज हुआ जी यहाँ पर? डैमेज तो बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अभी इसकी एस्टीमेट तो कह नहीं सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये मतलब करोड़ों का नुकसान। कितनी दुकानें बह गई हैं, कितना मतलब घर वर बह गए हैं? दुकानें तो अभी हमने काउंटिंग नहीं की। मेरा अपना आइडिया है कि कम से कम यहाँ पे दुकानें 50-60 दुकानें और 50-60 घर, होटल और शोरूम सब बह गए। तो सारा मिला के तो मुझे लग रहा है कोई 150-200 घर आज यहीं का इतने तो गए होंगे। मेरी जो आइडिया है, जजमेंट, काउंटिंग तो नहीं की अभी, तो आइडिया भी नहीं लग रहा है। 93 के बाद सबसे बुरा अभी हुआ है? 95 के बाद? 95 के बाद यही सबसे ज्यादा जो ये लैंडस्लाइड। इतना ज्यादा डैमेज 1-2 दिन में कैसे हो गया? बारिश 3 दिन डे नाइट 3 दिन, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी, 1 सेकंड के लिए भी, और इतनी ज्यादा हैवी बारिश हुई। Silence here, which reeks of pain, devastation and loss, because we've tried to talk to a few people. Other places we've been able to get a lot of reactions, not many people forthcoming, but see the sense of loss. Pavan will just show you, that's one vehicle completely overturned. It's a loading vehicle which had come here to get the fruits and go back to the plains, overturned. Frightening scenes of the utter chaos that reigned
uh, during the course of 24 hours. The other vehicle there stuck, half of it completely buried in the silt. This car showroom devastated. It's now been, the waters have taken away the entire ground floor. The stairs there to the top completely washed away. This entire building would be brought down. We've been told to stay away because it's very, very unsafe, clearly, to be there. Let's try and, get in a little deeper. मुझे यकीन नहीं हो रहा है यहाँ पे स्कूल था. आप मुझे बताओगे क्या था? यहाँ से हमारा जो ग्राउंड होता था वो स्टार्ट होता था यहाँ से. हाँ, इसके वहाँ से मतलब वो लगा हुआ था पूरा. पहले यहाँ पे मेन गेट था. यहाँ से नहीं, मेन गेट था यहाँ पर. आपका यहाँ पर एक सेकंड. आपका यहाँ पर मेन गेट होता था. यहाँ से स्टार्ट होता था मेन गेट. हाँ. और वहाँ पर कुछ वो पैनल वगैरह लगे थे और फिर वहाँ पर भी डंगा था और एल शेप में हमारा स्कूल था. फिर यहाँ पर जो सामने पत्थर पड़े हुए हैं. हाँ, ये पूरा पता नहीं, अब पता ही नहीं चल रहा कौन सा जगह कहाँ पर है. ये पूरा एल शेप में हमारा स्कूल था. अभी जब हम आए पिछले कल, हमें मतलब हमको पता ही नहीं चल रहा था यहाँ पर. अगर हम यहाँ पर पूछेंगे ना कोई कि यहाँ पर पहले स्कूल था तो हम भी अब ऐसा बोलेंगे अच्छा यहाँ पर स्कूल था, ऐसा बोलने को हो गया है अब. बुक्स, नोटबुक्स सारी स्कूल में रखे थे, बेंच में रखे थे. मेरा तो बोतल भी चला गया, अभी खरीदा था जो वो सब बह गया. पहले तो सिर्फ नॉर्मल जब इन लोगों ने वीडियो भेजा था तब तो लगा हाँ बच जाएगा. बाद में फिर रात को जब नेट आया था एयरटेल का, तब बाद में देखने को मिला कि ये सारा बह गया है. मैं तो रो रही थी रात को. रो रहे थे? नहीं, मैं भी रोती अगर मेरा स्कूल बह जाता. टीचर से बात हुआ? टीचर से हुआ, हाँ. 2-3 टीचर्स आए भी थे यहाँ पर देखने अभी. तो मतलब एक मेरी मैम थी, उनका वो साइंस मैम मीनाक्षी मैम, वो बहुत स्ट्रांग थी. वो कभी रोई नहीं. मतलब आज मेरी फ्रेंड ने बताया कि जब उनको फोन किया था तो वो रो रहे थे. बोला मेरे को बहुत मतलब अजीब लगा. वही थे जो हमारा विल पावर बढ़ाते थे और अभी वही थोड़ा वीक पड़ गए. तो बहुत All of this was a road. There was a road going in. I'll ask Pawan to show you. Can you see that? Those are residential houses that were taken away by the wrath of the river Beas. Still functioning, parts of it. See that little child there? Still living in these unsafe buildings. But this is, it actually seems like I'm wading through a river. One entire 2-lane highway went through these. One side was the residential buildings, the other side were showrooms, a few houses, a hotel, all of that gone. This entire house has also been swept away. आपका घर है जी? ये आपका घर है? ये हाँ जी? तो सारे ले गया, कुछ नहीं बचा. बैठने को कुछ है ही नहीं. ना और जगह जमीन है हमारे पास, ना घर है. साफ कर दे बिल्कुल. हाँ जी? बिल्कुल साफ ही कर दे. देखो हालात घर का. कहाँ रह रहे हैं? अभी तो मैं तो पिछले कल शाम को ही पहुंचे लाहौर से. आप लाहौर थे? जी में पैदल आए, वहाँ से रोड सारे ब्लॉक. लाहौर से पैदल आए हैं? पैदल आए जी. कम से कम 150-200 किलोमीटर पैदल आए. पूरा पैर में छाला ही छाला पड़ गई. अंधेरे होते होते पहुंचे. यहाँ देखा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना दीवार बचा है, कुछ नहीं. अब हम बुढ़ापे में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते. अब जो बेटियां काम करती हैं कुछ नहीं. बेटी दोनों को तो शादी हो गया. हाँ जी. आप और आपके जो हस्बैंड? हाँ जी, हम दो ही रहते हैं यहाँ पर. ये आपकी मदर का घर है? जी, मम्मी का घर है. जिधर एक्चुअली यहाँ पे फ्लड आया था, मैं खुद यहाँ पे इकट्ठे थी. बहुत बुरा हाल हुआ था. सैटरडे वाले दिन पूरा पानी भरा था. मैं घर के अंदर रही थी.
मुझे लगा शायद घर के अंदर रहने से भगवान देखेगा, मकान नहीं जाएगा, पर संडे वाले डे टाइम में, आफ्टरनून टाइम में पूरा पानी में चला गया। हम वहाँ पर ऊपर बैठे रहे थे, हमारी आंखों के सामने हमें सब कुछ दिखा, अपने घर की मतलब आंखों के सामने घर का एक एक कोना जाते दिखा मैम। मतलब इतना बड़ा हमें नुकसान हुआ है, मतलब कोई अंदाजा नहीं लगा सकता मैम, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। अभी भी देखिए, अब कहाँ जाए हम, कहिए, ना जमीन है ना घर है, और ना कोई पूछने वाला आ रहा है, कोई प्रशासन का कोई भी नहीं आ रहा है। और जहाँ तक अभी आपने देखा यहाँ से हेली जा रही है, खाली बस ऊपर से जाएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे कोई पूछताछ करने, कोई नहीं आएगा मैम, क्योंकि सब खुद भरे पूरे हैं, ये गरीबों की नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। With the flash floods of 2023, the river Beas, with all its wrath, its fury, has changed its course yet again. And with it, it has changed the course of so many lives here. I can subscribe to cliches and call it the great Himalayan tragedy playing once again in Manali and the Kulu Valley. But it'll just be sheer words for those living here. They need help, they need it urgently, they need relief, they need something tangible to hold where everything in their life has been swept away. Reporting with camera person Pawan Kumar, Preeti Chaudhary, standing in Alu grounds, Manali, for India Today.